Hello friends, welcome back to another amazing video. Today I am here with the registration process of Google Solution Challenge 2025 in collaboration with the Hack2Skill. And as you are aware, I already make an in-depth video regarding this solution challenge, like what you can expect from this challenge, what are the prerequisites, how you can participate in it, and what are the all requirements that you need to be with the part of the solution challenge 2025. वो मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना दी, अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखी है Google Solution Challenge क्या होता है, and you can check out this video. और इस पर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए अब जब इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, so I will be guiding you how you can register yourself in the Solution Challenge 2025. Again, I just want to give the brief about it. It's a global level hackathon conducted by the Google. It's open to all, but just a simple new change in the requirement is that the team you are going to participate with, it should be minimum 2 members. 2 members इसमें required है अगर आपको इस solution challenge में participate करना है, hackathon participate करना है, so minimum 2 members की team होनी चाहिए and max 4 to 5. Okay, so now we will be covering how you can register itself. Okay, so you will be getting all the important links in the description box. सारे links जिसमें जितने मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ, use करने वाला हूँ, you will get all the links in the description. First of all, coming to the registration page, you will get the link in the description. You have to come to this page. You need to click on the register now, and you already see that it started from the January 6, 2025. आज ही start हुए, so you need to click on the register button. After that, it will be redirect you to the login page. You have to log in with which ID, with the ID with which you want to participate. आपको उसके साथ login करना होगा जिस ID से आप participate करना चाहते हो. Once you log in, you will be directed to this page. मैंने login कर लिया था. आपसे login के टाइम पे आपको एक email ID देनी होगी और उस email ID पे एक verification code आएगा. Okay, don't sign in with the Google because it's not working right now. I tried to sign in with the Google, but it's not working. You manually have to give the email ID and a verification code will come to that, and you have to paste it, and you will be logged in this page. Okay, once you logged in, all you need to do, you need to first of all complete all these requirements. 2 requirements are there. You have to give a developer profile public URL, and you should be part of any on-campus GDG. ये दोनों में आपकी requirement fulfill करने वाला हूँ. Let me show you how first of all you can create a developer profile. You need a Google developer profile. So for that, click on this link. It will redirect you to the new tab, and here you need to log in with the ID with which you are participating. जिस भी ID से आप participate कर रहे हो उसके साथ यहाँ पर आप ऊपर टॉप बॉटम कॉर्नर में साइन पे क्लिक करोगे या लॉगिन पे क्लिक करोगे, आप लॉगिन कर सकते हो. Once you logged in with your ID, you need to fulfill certain criteria. First of all, you need to make your profile public. जब आप लॉगिन कर लोगे ना अपनी ID के साथ, after that you need to click on this 3 dots and click on profile. You have to make your profile public. It's very important, otherwise you won't be participated. Okay, आपका participation जो है cancel हो जाएगा. After that, once you directed to this page, हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ terms and conditions accept करनी पड़े. मेरी profile fresh नहीं है, आपकी profile fresh हो सकती है, and you will immediately get a skill batch here. So अगर मिले कोई problem नहीं मिले तो कोई problem नहीं है. But all you need to do is once you set up your profile, you need to click on the settings button. Click on this change settings. By initially your profile would be public private, so you need to make it public. So once you come to this settings, you need to scroll down and select public from here. Then you can create a custom web address for your public profile. In my case, it's Naman Goyal. So if I come back to my profile, you would be able to see that the public profile link is visible here. This one. This is your public profile link. In my case, is g.dev/Naman Goyal. You can create your custom profile URL. Once you make it, you need to click use this while registration. Registration time पे आपको इस public profile link की जरूरत पड़ने वाली है. So make sure you save it. Okay, कैसे कहाँ देना है, कहाँ given करना है, I will mentor you. Okay. Now, once you are fulfilled with this requirement, you need to scroll down and you need to join a GDG chapter. So what is the GDG chapter? So it's a Google developer group. It's generally occurred in colleges in different states and different cities. So it's highly possible that your college also have a GDG chapter. GDG chapter आपके ये colleges में होते हैं, तो आपकी college में भी हो सकता है रेस्पेक्टिव कॉलेज में GDG चैप्टर हो. एंड यस, इट बिकम्स अ रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट बी 18 ईयर एंड अबव. आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 ईयर से अबव होनी चाहिए. यू शुड बी एनरोल्ड इन अ कॉलेज. आप किसी डिग्री में एनरोल होना चाहिए. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं. उसके बाद हम बात करें व्हाट इज GDG चैप्टर. सो इफ योर कॉलेज ऑलरेडी हैव अ GDG चैप्टर, देन यू कैन यूज the name of your GDG chapter college, but in case if you are not the participant or the member of any GDG on campus chapter, then don't worry. I am here in collaboration with the GDG Indo Global College Mohali, so you can use them and you can become the member of that GDG chapter. They are providing you the free access or the access to their chapter, so you can join them and participate in this, register in this. So how you can do that? You need to simply go to the description of the video, and in the description you will find the link of this Google Developer on campus Indo Global College Mohali India लिंक. आपको इस गूगल चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, GDG चैप्टर का. यू नीड टू साइन इन विद द आईडी जिससे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसी के साथ साइन इन करना है. देन यू नीड टू क्लिक ऑन द जॉइन अस बटन. वंस यू जॉइन अस, यू विल इमीडिएटली गेट अ वेलकम मैसेज फ्रॉम दैट चैप्टर. आपको चैप्टर से उस चैप्टर से जो है वेलकम मेल आ जाएगा. इट मींस यू सक्सेसफुली जॉइन देयर GDG चैप्टर. वंस यू आर डन विद दिस, योर प्रीरिक्विजिट्स आर फुलफिल्ड. नाउ यू नीड टू स्टार्ट फुलफिलिंग और फिलिंग योर फॉर्म. First of all, give your full name, then give an email. Email will be automatically fetched from your login. And you need to give the WhatsApp number and alternative number. After that, you need to give the country, state, city.
from whichever you are right now, wherever you are right now. After that, date of birth, the gender, then occupation, college or university. Once you select that, you need to give the LinkedIn profile. आपको अपनी LinkedIn profile provide करनी है. It's not mandatory because it's not marked as star, but अगर है आपके पास LinkedIn profile, then you can give this. After that, here comes a crucial part: college name. In the college name, you should select your GDG chapter name or GDG on-campus chapter name. So in my case, if you are using the IGC Indo Global College GDG on-campus chapter, then you need to type here Indo Global College. And you don't have to put any other college name. It is not regarding from which college you are doing the degree. It's not regarding that. आप किस कॉलेज से डिग्री कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है. अभी जिस भी चैप्टर के अंडर आप एनरोल होकर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चैप्टर का कॉलेज नेम डालना है. सो इफ यू आर यूजिंग माय रेफरल इंडो ग्लोबल कॉलेज नेम, देन यू हैव टू सर्च फॉर इट इंडो ग्लोबल कॉलेज मोहाली इंडिया. यू नीड टू सेलेक्ट दिस वेरी केयरफुली. अगर आपके कॉलेज में चैप्टर नहीं हुआ, आपने किसी और कॉलेज का नाम डाल दिया, गलत डाल दिया, देन योर फॉर्म वुड बी गेट कैंसिल. सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन इट विद द perfect GDG chapter name. Okay, then you have to select the college state. So if you are participating with the Indo Global College, then you have to select the Punjab here, and for the college city you have to select Chandigarh, and degree, whatever degree you are actually pursuing. Okay, so you can simply search for BTech or BSc, then you can give the specialization, then you can select the pass out year. Then you have to give your developer profile link. This is the crucial part here. Developer profile link ये वाला था जो मैंने आपको दिखाया था. I already show you this one. You have to copy your developer profile link. Again, make sure it should be public. It should be public. Okay. After that, come here, paste it here, and you can click on the register now button. As soon you register, you will get a confirmation mail, and you got registered successfully. Once you click on the registration button, you will be redirected to this page, and here you will see the complete roadmap. First of all, we are now registered. Now we need to done with the team formation, and then we have to start working on the projects. Okay. These types of information would be covered in the WhatsApp group. आपको क्या करना है, किसी भी चीज की आपको हेल्प चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी. एंड देयर इज अ ऑफिशियल मीटिंग गोइंग टू हेल्ड फ्रॉम द 6 PM टुडे इटसेल्फ. आज शाम को 6 बजे एक ऑफिशियल गूगल तरफ से मीटिंग होने वाली है. देयर यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रोग्राम, एंड दैट मीटिंग लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप बोथ. आपको वहां पर जाकर ज्वाइन करके सारे अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू वुड बी ज्वाइनिंग दैट मीट. दैट वुड बी लाइव, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इट. द टीम साइज शुड बी 2 to 4. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कम से कम 2 टीम मेंबर होने चाहिए. उसके बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हो. जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको अपनी टीम फॉर्मेशन करनी है, अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह बनाना होगा. उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए, दैट यू कैन आस्क in the comment box or in the WhatsApp group. I hope I covered all the doubts. इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, so feel free to contact me, and that's it. If you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the WhatsApp group. Thank you very much. Good. Bye.